Hello. Hi. I'm back. Welcome you back also. Let's practice some CP. Okay. Unstable element. Okay. 242. 2242 C. एक सेकंड कौन सा पेज है ये? फर्स्ट पेज है। गेसिंग ये भी फर्स्ट पेज ही है। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये दोनों फर्स्ट पेज है। ठीक है। सो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पहला जो यहाँ नहीं करा है? सिंस मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, आई बिलीव ज़िली वाला किया था मैंने। ओके, ज़िलियन ब्रैकेट स्वैपिंग किया मैंने। ज़िलियन ब्रैकेट स्वैपिंग नहीं करा था। उसके बाद वाले भी मैंने नहीं करा। उसके बाद वाले कौन सा नहीं करा? स्टैमिना टास्क नहीं करा है। स्टैमिना टास्क करते हैं। कॉटलिन का नहीं है ना? ठीक है। ओके। ओके, ये वाले नहीं कर रहा मैं ऐसे वाले आई एम गोना अवॉइड। टाइम डिस्प्ले ट्रिगर्स भी नहीं करा मैंने इसको। क्या स्पेसी वाला है? ओके, दिस एब्सोल्यूट सीक्रेट मैसेज। सीक्रेट मैसेज नहीं करा। ठीक है। नॉट इंटरेक्टिव और नॉर्मल जेन्युइन क्वेश्चन। ठीक है। Bob the senior spy has intercepted and actually you know what, मैं वो डालता हूँ, टैग डालता हूँ एरेस का। मैं एरे का क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एरे क्यों नहीं है यहाँ पे? आई कुड स्वेयर एरे था। टू पॉइंटर शेड्यूल आर पी क्यू आर एस टी जी डी पी बिटमास। ओके, जो भी। um, ठीक है। जो भी।
ओके। ठीक है। मैं आता हूँ अभी, खाना आ गया है, खाना आने वाला है मेरा। हेलो, ओके, सो मैंने खाना खा लिया है और काफ़ी देर तक मैं सोच भी रहा था क्वेश्चन के बारे में। हाँ, काफ़ी काफ़ी देर तक मैं सोच रहा था क्वेश्चन के बारे में। सो आई थिंक आई हैव द सॉल्यूशन। सो the idea is I broke the question into two parts. So I'm like, key, okay, string and size का. Now the thing is, it could have like a segments, which is say, let's say, segment is I don't know, p size का. So p size के कुछ segments होंगे, and that in total is going to make up n. So let's say p के q segments हैं, size p. So q multiplied by p is going to be n, right? Now we'll keep this for now. So I was thinking कि what if binary search लगा लूँ. So मैं एक p size का segment लूँगा, and I'm gonna be like, okay, p is gonna be the smallest segment possible. Let's just see कि p possible है कि नहीं, p पे segment का deciphering करना possible है कि नहीं. And then for using somehow, फिर मैंने उतना नहीं सोचा. I was like, okay, set sets use करूँगा. तो okay, is it possible कि in like जितने भी strips हैं, कोई ऐसा element है कि है क्या जो p times like
q बार रिकरिंग आ रहा है, लाइक इफ द लेंथ इज p then p प्लस p करके भी किसी इस पूरे स्ट्रिप में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, फिर प्लस p करके भी इस पूरे लाइक इन फ्रॉम द लाइक लिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स के उस सेल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। सो और फिर ऐसे लाइक पूरा एक p लेंथ का मैं मैनेज कर लूँ, देन द आंसर इज गोना बी ट्रू एंड देन दैट वुड इट वुड बी पॉसिबल फॉर दैट। फिर मैं उससे छोटे का चेक करूँगा, बट द थिंग इज कि इट्स नॉट ऑलवेज गोना बी पॉसिबल कि सपोज 3 के लिए इफ इट इज ट्रू देन 4 के लिए भी ट्रू ही होगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। That's the requirement for binary search. So I was like, okay, सारे traverse कर, but then that would be 10 to the power 4 into 10 to the power 4 into like 5 है यहाँ पे, तो 5 का भी square है, it's like 25 into 10 to the power 8, which is like 28 25 seconds, so that's not good. But the thing is कि तो मैं q की values वो कर रहा हूँ, right? q की values को test कर रहा हूँ, so q is going to be a factor of n, so I'm gonna factorize n, जितने भी factors होंगे I'm gonna try to do that. And one of the rules जो मैंने बहुत पहले इन समय ट्यूटोरियल मैंने देखा था, इस किसी भी नंबर का लाइक n 1 by क्यूब से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, लाइक सपोज नंबर n है, अब इट्स गोना बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली n की पावर n का क्यूब रूट, इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो इफ वी हैव लाइक 10 to the power 4 5 into 10 to the power 4 का 1 by cube root multiplied by 10 to the power 4 into 5, इवन इसको राउंड अप करके लेट्स से, बिकॉज 10 to the power 4 का क्यूब रूट मुझे नहीं पता क्या होता है, बट इवन इफ आई लाइक राउंड अप एंड से 10 to the power 6 का क्यूब रूट, दैट वुड बी 10 to the power 10 to the power 2 multiplied by 5 into 10 to the power 4, which is like 5 into 10 to the power 6, which is still like fine, way less than 2 seconds. 2 seconds would be 2 into 10 to the power 8. So and like this is like across all the test cases. और बांटने से टाइम और ही कम होता है as far as I know. So अगर across all test cases it's 10 to the power 5 given versus एक ही test case में 10 to the power 5, तो एक ही test case में 10 to the power 5 would take more time, I think. क्या जो भी in any case it's like differences बहुत ज़्यादा, 10 to the power 6 is way far from 10 to the power 8, so I'm thinking it's gonna work. Now the question is कि ये वाली चीज़ कैसे करूँगा? So let's say मैंने एक सेट कर लिया सेगमेंटों का, Q is a segment, Q का पहला एलिमेंट Q टाइम्स बाद प्लस Q प्लस Q प्लस Q करके आएगा, इसकी क्या गारंटी है? सो I could have n sets, that's might be a little bit too much, or I could have like okay, 26 into n साइज का एक मैं वो बना सकता हूँ। सो अगर किसी भी पोजीशन पे है, I'm gonna mark it as 1, then I'm gonna take this and plus उतना करके मैं चेक करूँगा, because प्लस प्लस करके तो करना ही पड़ेगा। I'm gonna just okay, I can manage that. I can manage that. I'm going to be grandmaster. Not soon, but one day. Soon, I would be candidate master. मेरे को गूगल जैसी कंपनी में जाना है, and I might go through this, or I might go through something else, but मास्टर तो बनना ही बनना है मुझे। ग्रैंड मास्टर में भी आई कैन टेक टाइम आराम से, जब मैं I don't know, I want to be good at this. And n case in n k, and I'm gonna have k strips, right? Okay. So I would have hmm okay. You know what, मैं इस तरह से लेता हूँ int string s नहीं
Huh. Um, it's gonna be like 3 DP, so it's gonna be and like presence I can use वो check करना तो is there or not. I'm gonna say like frequency, and then it's gonna be like n plus one, and then it's gonna be actually n plus one, and then we're gonna have k plus one because k are different strips. And for each strip, I'm gonna have 26. So 0 is for A and 26 alphabets. I'm gonna have that. Uh, Not sure this is valid in C++, but it's dynamically allocate नहीं कर रहा हूँ, but जो भी it works. Not IJ. N. Okay. Um, so you're gonna have this character ka value, so I don't know, int sage is gonna be s of j minus a. ये सबसे लास्ट में जाएगा, so frequency of. Oh, by the way, is it by default initialized to 0? No, it's not by default initialized to 0. Actually, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ. I can do this. And then this is gonna be 0. N can be at max 50,000 and then K can be at max. No, but then no, मुझे नहीं पता. Ki is equals to 0, I less than equals to n plus 1. For int j is equals to 0, j is less than equals to k plus 1. K plus plus. पता मैंने क्या खाया? I had oh shit, K नहीं ले सकता, so I'm gonna have to take something else. J K and X or something. X less than, I don't know, 20 less than equals to 20, less than 26 plus 0 to 25. I had two things. I had a I had a Sikh kebab, chicken Sikh kebab, or I had a chicken korma roll. Okay, the reason I had that because instead of something healthy was because I wanted protein. और कुल मिला के मुझे 80 ग्राम प्रोटीन मिल गया, which is good. And one of the thing is that मुझे kebab खाना था. Kebab was really, really good. I like the kebab. Instead of eyes position, eyes position, ठीक है. So I would be J, and then K is the किस strip में है. Okay, so हर बार में n sets maintain, n छोटे-छोटे sets maintain करने में कितना लगेगा? Like it shouldn't be too much. Because ये जो मैं कर रहा हूँ कि हर पोजीशन में जा जा के इतनी बार देखना. That would be suppose we have P, हर एक के लिए कर रहा हूँ तो इसमें we have K, so
k नहीं, बार बार मुझे वो करने की जरूरत नहीं। सो एक के डिस्टेंस, सो q होंगे, सो q इंटू k, 1 2 3 जितने भी हैं, मल्टीप्लाइड बाई k, बिकॉज उतने सारे स्ट्रिप्स हैं, एंड देन q इंटू k मल्टीप्लाई, सो k इंटू m। ओके, सो हर बार जा रहा है इतना। हाँ, q इंटू, because that would be already bad. That would be 10 to the power 5 into 10 to the power 7, and ठीक है, it's not that bad. But like, hmm, उस पोजीशन पे है कि नहीं, मुझे बस ये चेक करना है। आई डोंट केयर किस स्ट्रिप में है, मुझे बस चेक करना है कि उस पोजीशन में है कि नहीं। तो मैं ये ले भी क्यों रहा हूँ, स्ट्रिप वाला मैच, फालतू वाला मैं ले क्यों रहा हूँ? आराम से लो, जे चेंज करने की जरूरत नहीं मुझे, बट मैं कर रहा हूँ। जीरोस लगे, ठीक है, ठीक है। Only thing is, if this is this, so I, because I strip, no, और जे पोजीशन, j+1 करता हूँ मैं, सो उस पोजीशन पे ये मिला मुझे, which is good. ch is equals to 1. Okay, ठीक है। Now the thing is कि okay, factors, right? So should I count the factors one by one? Okay, let's see. I can do that in root, and then मुझे factors मिल जाएंगे सारे के सारे, फिर मैं हर एक को करके देख सकता हूँ। So I can do that either, या मैं एक वेरिएबल में, एक एरे में स्टोर करा सकता हूँ, मैं सारे फैक्टर्स को उस तरह से चेक कर सकता हूँ। I prefer the variable method actually. Sorry, I prefer the method vi facts factorials, or just f, and I is equals to 1, I multiplied by I less than equals to what is it, n, n plus if n mod I is not equal to 0, and just continue. If n by I is equal to I, then just f dot push back I. Otherwise, f dot push back I and f dot push back n by I. Now, I don't think I need to sort this, because that doesn't help us in this case. Sort करने से is not like sort करने से, because every factor is independent of the other factor. It doesn't have to be like increasing them. So but actually sort कर लूंगा ना, तो फायदा ये होगा कि जैसे कुछ छोटे में it will pass, then मैं break कर सकता हूँ। So sort f dot begin, f dot end for int I is equals to f, ठीक है। if check I, नहीं, I factor, and then I'm gonna give string name, frequency array, and then do you need n? I think you need n.
So you have n I size का लेना है 1 से लेके I तक का लूप चाहिए. Okay, got it. Got it. Okay, okay. If this is true, then let's check this is true. Then int answer is equals to I, and then break say out answer. No, 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 no. Okay, now. Okay, vector. 2D vector. How do you input this? Like, how do you pass this as a pass by reference? Let me look it up. Int a n m. How to pass by reference? Pass a by reference. बस नींद आने लगी धीरे धीरे. अरे बकचो फालतू यार. 2D array ले लो इससे अच्छा. या 3D array ले लेता अगर इससे ज्यादा पड़ता. 3D से ज्यादा कहाँ पड़ता है डीपी में. 3D से ज्यादा कभी जरूरत पड़ती का. VVI freak. Can't wait to get to DP भाई. Can't wait to get to DP. +1. I don't know. Tung 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 tung. It's 6 0. There you go. हटाओ 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 सब हटाओ. Okay. I hi I hi I hi. Okay. Bool check. तुझे अक्सा बीच घुमा दूं. हाँ चलती क्या कहना. आय हाय आय हाय हाय आय हाय आय हाय. चाचा की चाय पिला दूं. हाँ चलती क्या. सुन सुन के बातें थक गई. सुन सुन के बातें पक गई. तेरे साथ घूम के थक गई. इसमें क्या लगाऊं मैं. चेक करना राइट. सो okay. Okay. So for y I1 equals to सुन सुन के बातें थक गई. तेरे साथ घूम के पक गई. अरे जाने दे झूठे बहाने से ऐसे न सपने देगा. starting IDX. So IDX1 is equals to I don't know. I, and then while IDX1 is less than equals to less than equals to n, and then you're gonna have to check key is there. सुन सुन के बातें थक गई. तेरे साथ घूम के. 26, right? So is there any sort of element which is in all 26 of them? Okay, is there any element which is in all 26 of them? What I can do for that is 26. 26. 20, 20, unos, dos, tres. I don't know. Um,
तो वो लूप के बाहर होगा for and j is equals to 0, j is less than 26, j plus plus int idx is equals to I, while idx is less than equals to n. Okay, a bool, okay, is equals to false. I don't know, Joey, while this thing, idx plus is equals to क्या क्या प्लस में p प्लस करूंगा, so 1 2 ठीक है. If freak of, okay, so position is going to be idx, and then the thing is going to be j equal to 0, then that's just break it, okay, is equals to false, and then break. Otherwise just keep on doing it, and then if it's like true, so okay, bool, okay, is equals to true, ठीक है. Then fine, bool, I don't know, flag or some shit, okay, false, true. If okay, it's true, then that means कि किसी एक का match हो गया, then what you do is flag is equals to true, and then break. हाँ, देखिए ठीक है, चलो एक का flag true हो गया. Now if res, which is no, if flag is true, एक से नहीं हो जाता, फॉल्स कर दो अगर नहीं है, अगर किसी में, अगर सब में हो गया तो ट्रू करना है, यूजुअली पॉसिबल, अगर जैसे मैंने ट्रू करके रखा एंड किसी एक में तो फॉल्स हो गया, बट बाद में तो हाँ नहीं नहीं एक से नहीं हो पाता. बट आई मीन ओके, एक से हो जाता है वैसे टेक्निकली. फ्लैग फ्लैग इज इक्वल्स टू लाइक ट्रू. एंड फॉल्स नहीं नहीं, तक हर बार फॉल्स कर दिया, ठीक है. Nothing is flag if excuse me. Flag is equal to false. Flag is true. Actually, ठीक है. हर इसमें ट्रू, हर इस केस में ट्रू कर दिया. जैसे ही फ्लैग अगर ट्रू है देन यू जस्ट ब्रेक, एंड फिर ब्रेक करके वो उसके बाहर जाएगा. नाउ द थिंग इज इफ फ्लैग इज ट्रू, जरूरत भी नहीं है इसकी. आई थिंक अगर फ्लैग ट्रू है देन व्हाट यू गोना डू इज, अगर फ्लैग ट्रू है तो कंटिन्यू करो. अगर फ्लैग फॉल्स है व्हिच मींस किसी के लिए भी ट्रू नहीं है. ओके 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 ओके, ठीक है. देन दैट मीन्स कि that's wrong. Then what you do is you turn false. Otherwise किसी ना किसी के लिए true होते रहेगा, and at the end you're gonna return, excuse me, true. You know what I think is like, I think कि O करता हूँ and then
it automatically indents itself. और अगर मैं let's say वो करता हूँ and then I start from the back and then I have to press tab. I believe वो करने पे भी वो like behind the scenes /t ही press कर रहा है, /t ही input दे रहा है. खैर जो भी whatever, that might not have made sense. Return true, return false, should work. बड़ा कोड था, थोड़ा not बड़ा कोड but like सोचने में थोड़ा लग गया time. Am I fully visible in the screen? I think I am. Okay. क्या okay, silly mistakes. बड़े बड़े कोड में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है. हाँ, ओके ओके. इसके बाद मैं डार्क सोल्स खेलूंगा. ऑफिस का काम बचा है यार, ऑफिस का काम बचा है. हाउ कैन आई फॉरगेट ऑफिस का काम? ऑफिस मेरे. ठीक है 132. अबे यार ये नहीं करना था. वैसे सही निकला है बट वैल्यू नहीं बतानी थी यार, वो बताना था कि अबे यार क्या कर दिया मैंने. स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना के रिटर्न करना था. STRNG. और स्ट्रिंग में अगर लाइक क्वेश्चन मार्क आ रहा है दैट मींस लाइक फॉल्स और सम शिट. ठीक है. कि इंट नहीं 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 स्ट्रिंग फंक्शन रिजल्ट इज इक्वल्स टू चेक. सेम चीज़ है, बाकी चीज़ सेम रहेगी. if pres of 0 is equals to continue, else answer is equals to pres big, and that's it. The answer is दो वेरिएबल्स की जरूरत है, एक वेरिएबल से. बट अब ये छोटी छोटी वो करने का कोई फायदा नहीं है. to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. एक्चुअली कर सकता हूँ मैं. ठीक है. return oh, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. ठीक है. So if this is not true, then what I'm gonna do is res dot push back, and then I'm just gonna do it. I'm just gonna be like a plus whatever, whatever. Also j. That's it. A j, right? So it's j के लिए हुआ है, and if it's like true, then oh, actually no. Res dot push back j. ठीक है. Otherwise, just like keep on doing it. Okay, this should work. Right, the thing is you have to repeat that also, है ना. तो ठीक है, I'm gonna have to repeat that till how many times, like okay. I is equals to 0 I less than n by answer dot size
Now that's the answer. There we go. INF, infinity, yes. ठीक है. This should be this should work. कितना टाइम लगेगा? 2 ढाई बज गए क्या? ओके, नो नो नॉट दैट मच टाइम, बट हाँ ओके, ओवरऑल ऑल इन ऑल बहुत टाइम लग गया, मतलब जब से खाने के बाद बैठा हूँ तब का गिन रहा हूँ. स्टिल 45, अराउंड 45, नॉट 45 मिनट्स, मे बी लाइक 40 मिनट्स, मे बी, आई डोंट नो. 2194 से सबमिट हो जाए फिर बोलना मुझे सिर्फ. ओके. अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक दिस. जो इम्प्लीमेंट करना था यहाँ पे, ओके, पहले तो कैवियार्ड यही था. कैवियार्ड का मतलब क्या होता है? लेट मी लुक इट अप. इट्स कैवियार्ड. ठीक है, पहला कैवियार्ड तो यही था कि इसमें लाइक फैक्टर्स को ही टेस्ट करने थे, और दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ओके कैसे टेस्ट करना है. ये दिस वाज इंटरेस्टिंग टू अप्लाई. इस तरह से तुम टेस्ट कर सकते हो कि उसने पीरियोडिकली उतने पीरियड्स पे आ रहा है कि नहीं, लाइक पीरियड उतने डिस्टेंसेस पे आ रहा है, पीरियोडिकली उतने पीरियड्स में आ रहा है. आई डोंट नो, जो भी वर्ड्स बोलते हैं, लाइक रिपीट उतनी बार उस फ्रीक्वेंसी में उस डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है कि नहीं, जो भी whatever that word is. ठीक है. So yeah, I'm not an English teacher. Whatever that word is, I'm a problem solver. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, and I think that's enough for recording. इसके बाद मैं अपने से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.